बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ असेसमेंट BSN थर्ड सेमेस्टर यूनिट नंबर 6 असेसमेंट ऑफ एब्डोमन एनस एंड रेक्टम। ऑब्जेक्टिव मैं अक्सर सारे लेक्चर फास्ट रीडिंग कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कस the pertinent health history of question necessary to perform assessment of the abdomen, anus, rectum. Describe the specific assessment to be made during the physical examination of the abdomen. Discuss component of rectal examination. Document finding. List changes in abdomen that are the characteristic of aging process. Digestive system, the system of organ responsible for getting food into and out of the body and for making use of food to keep the body healthy. Digestive system, gastrointestinal tract, mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. Accessory structure, teeth, tongue, salivary gland, liver, gallbladder, pancreas. And this is the all ये digestive system का पूरा डायग्राम है। एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे साथ एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है। राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर। इसमें जो ऑर्गन आ रहे हैं लिवर, गॉल ब्लैडर, डिविडेनम, हेड एंड पेंक्रियास, राइट किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, हेपेटिक फ्लेजर ऑफ कोलन, पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स एंड असेंडिंग कोलन। लेफ्ट अपर में स्टमक, स्प्लीन, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, बॉडी ऑफ पेंक्रियास, लेफ्ट किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, स्प्लीनिक फ्लेजर ऑफ कोलन, पार्ट्स ऑफ ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन। राइट लोअर में सीकम, अपेंडिक्स, राइट ओवरी एंड ट्यूब, राइट यूरेटर। लेफ्ट अपर लेफ्ट लोअर में पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, लेफ्ट ओवरी एंड ट्यूब एंड लेफ्ट यूरेटर। ये हमारे साथ एब्डोमेन को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक, एम्बेलिकल, हाइपोगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। टोटल इज 9th रीजन। सो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में लिवर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर एंड लार्ज इंटेस्टाइन आता है। इसमें लिवर, स्टमक, स्प्लीन, डिविडेनम, एड्रिनल ग्लैंड एंड पेंक्रियास। और लिवर, टेप, स्टमक, पेंक्रियास, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन एंड लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें असेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट किडनी, और इसमें डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसमें सिग्मोइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। और हाइपोगैस्ट्रिक में आता है हमारे साथ ब्लैडर, सिग्मोइड कोलन, इंटेस्टाइन, ये वाली चीज़ें। इसमें अपेंडिक्स आता है, सीकम, असेंडिंग कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बस 9th रीजन और ये 4th रीजन। और इसमें जो ऑर्गन आते हैं ये अक्सर MCQs में आता है, इसको रिमेंबर करें। एनाटॉमी ऑफ GIT ट्रैक, GIT ट्रैक की एनाटॉमी क्या है? पैरोटिड ग्लैंड, सिलिवरी ग्लैंड, टंग, टीथ, सबलिंगुअल, सिलिवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर। दिस इज़ द एनाटॉमी। और यहाँ पे स्टमक की एनाटॉमी है। ये एसोफेगस है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसको कहते हैं कार्डिया। ये इसका बॉडी, इसका लेजर कार्वेचर है, ये इसका ग्रेटर कार्वेचर है। इसको फंडस कहते हैं, इसको सीरोजा अपर जो होता है। एंड मस्कुलरस लेयर इसका लॉन्गिट्यूडनल है, और सर्कुलर लेयर एंड ऑब्लिक लेयर इसके मस्कुलर हैं जो मैकेनिकल डाइजेशन करता है। रोजेस ऑफ म्यूकोजा, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक किनाल, पाइलोरिक स्पेंक्टर। दिस इज द डिविडेनम, यहाँ पे पाइलोरिक स्पेंक्टर होता है। एनाटॉमी है ये इसको। दिस इज द लिवर, लेफ्ट हेपेटिक डक, राइट हेपेटिक डक, हेपेटिक पोर्टल वेन, कॉमन हेपेटिक डक, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक, डिविडेनम, स्मॉल फर्स्ट पास ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉमन बाइल डक। दिस इज द पेंक्रियास, स्टमक, हेपेटिक आर्टरी एंड दिस इज द स्प्लीन। गॉल ब्लैडर, डिविडेनम, राइट कोलिक एंड ड्यूजिनल जंक्शन, असेंडिंग कोलन, इलियोसिकल जंक्शन, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस, सिग्मोइड, डिसेंडिंग कोलन, जेवजेनम, ट्रांसवर्स, लेफ्ट कोलिक, प्रेशर एंड। सो ये सारी GIT की एनाटॉमी आपने पढ़नी है कि एसोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो 3 पार्ट्स हैं, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर उसका में असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, फिर सिग्मोइड, रेक्टम और एनस। ये जस्ट एनाटॉमी है, जिस नाम इसको रिमेंबर करें डायग्राम से आपको नज़र आता है। मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ GIT सिस्टम, ये अक्सर MCQs में पूछा जाता है।
जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होता है सेलेवरी एमाइलेज, पेंक्रियाटिक एमाइलेज एंड माल्टेज से होता है, जो प्रोड्यूस इन सेलेवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, साइट ऑफ रिलीज माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड, और इसका पीएच होता है न्यूट्रल एंड बेसिक होता है। प्रोटीन की डाइजेशन पेप्सिन, ट्रेप्सिन एंड पेप्टाइडेज, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करता है पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एसिडिक, बेसिक और बेसिक। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन न्यूक्लियेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और बेसिक होता है। फैट डाइजेशन लाइपेज करता है जो पेंक्रियाज से सीक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और बेसिक होता है। फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, फिजियोलॉजी मीन फंक्शन, सेलेवरी ग्लैंड क्या फंक्शन करता है, प्रोड्यूस सलाइवा विच मॉइस्ट फूड एंड सेलेवरी एमाइलेज विच स्टार्ट्स द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिवर प्रोड्यूस बाइल साल्ट्स विच इमल्सिफाई लिपिड्स एडिंग देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, gallbladder store concentrates and release bile into the small intestine through the common bile duct. Pancreas करता है production pancreatic juice which is secreted into the small intestine via pancreatic duct, contain bicarbonate, neutralize the pH of the chyme and digestive enzymes that break down carbohydrate, protein and fats. माउथ क्या करता है, मैकेनिकल डाइजेशन करता है, इंक्लूड चीविंग एंड swallowing, केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स करता है, कहाँ पे, माउथ पे। फिर स्टमक का क्या काम है, मैकेनिकल डाइजेशन, इंक्लूड पेरिस्टाल्टिक, मिक्सिंग एंड पॉपुलेशन, केमिकल डाइजेशन एंड प्रोटीन एंड फैट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ lipid soluble substance such as alcohol and aspirin. Small intestine mechanical digestion includes mixing and propulsions, primary of segmentation, chemical digestion of carbohydrate, fats and polypeptides, nucleic acid, absorptions of peptides, amino acids, glucose, fructose, fats, water, minerals and vitamins. Large intestines mechanical digestions include segmental mixing and propulsions. No chemical digestions except by bacteria, absorptions of ions, water, minerals, vitamins एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ से आपको पूरी इनाटमी का पता चलता है, वो ये इसके फंक्शन है। इसको रिमेंबर करने के बाद यू नो इनाटमी एंड फिजियोलॉजी। health history, biographical data, current health status, past history, family history and symptom and analysis. Focused abdominal history. If there is a little time to do a complete history, focus history can provide a baseline information, identify current symptom related to digestion elimination as a risk factor, GIT. Do you have any abdominal pain? आपके साथ पेशेंट आया है वो, तो आप उसे यही वाली क्वेश्चन करोगे। हैव यू एवर हैड द फॉलोइंग स्टमक अल्सर, हेमोरॉइड्स, हर्निया, बाउल डिजीज, कैंसर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, एपेंडिसाइटिस? हैव यू हैड abdominal surgery? If so, when, what type, were there any substance problem? Do you have a family history of ulcer, gallbladder disease, bowel disease, cancer? Do you have any problem with swallowing, heartburn, nausea, yellowish your skin, gas, bloating or vomiting, not onset, quality and quantity? Do you have any food allergy or lactose intolerance? तो आप ये वाली क्वेश्चन पूछोगे। अच्छा, have you noticed any recent weight changes? What is your usual weight and height? How is your appetite? What did you eat in the last 24 hours? How is your health usually? Are you currently being treated for the health problem? If so, what? How often do you usually have a bowel movement? Have you noticed any changes in your bowel movement? Are you have a problem with diarrhea, constipation, hemorrhoids, fecal incontinence? Have you ever noticed blood in your stool, hard black terry stools? How often do you urinate? Do you have incontinence, burning when you urinate? When was your last menstrual period? Do you smoke? How many packs a day? Do you drink alcohol? If so, how often do you straight drugs? How many cups of coffee, tea or caffeinated soda you drink every day? Have you been exposed to an infectious disease recently? What is your occupation? Have you been immunized against hepatitis B? Have you ever had a blood transfusions? If so, when? Do you take any prescribed medications? What are they? Do you have any allergy to medication? What OTC medication, herbal prescriptions do you use? Do you use antacid, laxative, enema, NSAID or aspirin? What home remedies do you use? तो ये सारे क्वेश्चन पूछोगे। Sign and symptoms of GIT system: bleeding, abdominal pain, dysphagia, constipation, abdominal bloating, nausea, vomiting, anorexia, lethargy, steatorrhea, weight loss, increased bilirubin, jaundice, temperature, heartburn, bad canals with
तो ये इसका ट्रिक है। तो ये सारे टर्म्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ पेन बाय एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स, जहाँ पे क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन है तो वो MI हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन, एस्कीमिया हो सकता है, लंग्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, स्प्लीन में रैप्चर्ड स्प्लीन हो सकता है, स्टमक में गैस्ट्रिक अल्सर, एसोफेगाइटिस हो सकता है, गर्ड हो सकता है, हाइटल हर्निया हो सकता है एंड वेरिसिस हो सकता है। अगर राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है तो हार्ट का MI हो सकता है, स्कीमिया हो सकता है, लंग्स में निमोनिया हो सकता है, गॉल ब्लैडर में कोलिलिथासिस हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, लिवर में हेपेटाइटिस और कैंसर हो सकता है, इंटेस्टाइन में ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में अगर पेन है तो ओवरी, यूट्रस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन सिस्ट, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज हो सकता है, इंटेस्टाइन में परफोरेशंस, कॉन्स्टिपेशन, डाइवर्टिकुलाइटिस, हर्निया एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, किडनी में नेफ्रोलिथासिस हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट में ओवरी, यूट्रस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन सिस्ट, PID हो सकता है, इंटेस्टाइन में परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉन डिजीज, डाइवर्टिकुलाइटिस, हर्निया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस हो सकता है और किडनी में नेफ्रोलिथासिस और इन्फेक्शन हो सकता है। GIT सिस्टम असेसमेंट स्टार्ट विद वॉश हैंड। अगर आप असेसमेंट कर रहे हो GIT की, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है तो आप पहले वॉश हैंड करोगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करोगे, परमिशन प्राइवेसी रखोगे, एक्सपोज एरिया अंडर एग्जामिनेशन करोगे, राइट साइड अप्रोच करोगे, सेट अप लाइट एंड टेम्परेचर करोगे, हेल्थ हिस्ट्री ऑफ GIT करोगे तो साइन एंड सिम्टम, नाजिया एंड वोमिटिंग और पेन है तो साइन और सिम्टम को पहले देखोगे। तो उसके बाद फूड एंड मेडिकेशन, एलर्जी, मेडिकेशन हिस्ट्री उसका क्या है, पास्ट हिस्ट्री उसको देखो, हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी हुई है या नहीं, लास्ट ओरल इनटेक व्हेन, व्हाट एंड हाउ, उसने क्या खाया है और कैसे खाया है, क्यों, इवन टू प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ चीफ कंप्लेंट उसी पूछोगे। GIT असेसमेंट टेक्निक, पहले इंस्पेक्शन करोगे, फिर ऑस्कल्टेशन करोगे, फिर परकशन करोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर पाल्पेशन लाइट करोगे, फिर डीप करोगे। इक्विपमेंट नीडेड फॉर GIT सिस्टम, क्या क्या ज़रूरी है, ग्लव्स ज़रूरी है, टंग डिप्रेसर, स्टेटोस्कोप, मेजरिंग टिप मार्क्ड विद सेंटीमीटर, स्किन मार्किंग, पेन होना चाहिए, अल्कोहल स्विप होना चाहिए, नोट बुक होना चाहिए और फ्लैश लाइट होना चाहिए। तो ये इसके क्वाड्रेंट्स हैं। तो ये इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है। ये क्या है, लेना एल्बा है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स है, ये इसका एम्बेलिकस है, एंटीरियर इलियक स्पाइन है, ये इसका मिड लाइन है, इंजॉइनल लिगामेंट है, साइफेलस प्यूबस है एंड रेक्टस एब्डोमिनस है, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स है एंड कोस्टल मार्जिन है। फोर क्वाड्रेंट मेथड, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इसमें लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पाइलोरस होता है, ड्यूडेनम होता है। पहले स्लाइड में सबका नाम लिया है। ये इसका 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन है। इसमें 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन और उसमें जो मौजूद ऑर्गन्स हैं। Approaches, perform the abdominal examination is warm private environment, have your patient empty her his bladder before examination so that you do not mistake full bladder for amount, ask patient to lie supine with her or his arm aside, warm both your stethoscope your hands before proceeding with examination, remember to work from right side, mana khosido itsamlawa lo sunay serta takida और वितवया पहला ना खजोन खोली की अपने आप को रेडी रखे एग्जामिनेशन के लिए। जनरल इंस्पेक्शन, न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका क्या है, वेस्टिंग है, पिलर है, जॉन्डस है, लिवर डिजीज़ है और पिगमेंटेशन, हीमोक्रोमाटोसिस है उसको। एब्डोमिनल असेसमेंट करोगे तो पहले डिस्टेंशन करोगे, लिवर प्रॉब्लम, बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस, रिजिडिटी, ब्रॉड लाइक ब्लीडिंग, गार्डिंग, मस्कुलर टेंशंस व्हेन टच्ड, एक्imosis, रिबाउंड टेंडरनेस, इन्फेक्शन और मासेस। उसके लिए ट्रिक भी बताया है कि डिओर्जम इंस्पेक्शन करोगे तो ये सिमेट्री और मूवमेंट विद रेस्पायरेशन देखोगे, स्कार्स देखोगे, स्ट्रिया देखोगे, स्टोमा देखोगे, शेप ऑफ एम्बेलिकस देखोगे, इन्वर्टेड है, फ्लैट है या इवर्टेड है, शेप ऑफ द फ्लैंक देखोगे कि फुल है, स्ट्रेट है, स्किन लेजन भी देखोगे। 4P प्रोमिनेंट वेन देखोगे, मेडुसा, पल्सेशन विजिबल है, इयोटिक एनोरिज्म वाला, पेरिस्टालिसिस विजिबल है या नहीं, पिगमेंटेशन और कोलोन साइंस देखोगे और डिस्टेंशन, फ्लैट, फ्लूइड, फीटस, ये फीसिस। अच्छा, इंस्पेक्शन ऑफ द एब्डोमेन, इंस्पेक्शन ऑफ द एब्डोमेन असेसमेंट टेक्निक, हैव द पेशेंट एम्प्टी ब्लैडर,
Position patient supine, knees can be slightly flexed. Relax abdomen, inspect abdomen from the side, foot bed, note size, shape, symmetry, movement, respiration, peristalsis, pulsation, face, character, order, color, hair distribution, lesion. Skin color should be consistent with the patient. Abdominal skin intact with no lesion. Masses, stria may be present if new, should be pink, old, white, and will be lena negra. This line is called lena negra. Stria, inspecting the abdomen, आसान बातें हैं. एब्डोमिनल फाइंडिंग रेशो उसका जॉन्डस है, लिवर डिजीज, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, साइनोसिस, हाइपोक्सिया, ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड एम्बेलिकस, colon, hemorrhagic pancreatitis, intraperitoneal bleeding, discoloration of lower abdominal flanks and lower back, pancreatitis, extraperineal bleeding, Barossa recent trauma, pink purple stria and Cushing syndrome, spider angioma, liver failure, and caput medusa. Dilated veins extend from the umbilicus, liver failure, hernias, protrusion of abdominal organ through opening abdominal wall caused by weakness, abdominal muscles seen, bulges that occur when the patient bears down. Diastasis recti, separation of the rectus abdomen muscles that occur in the lena alba, occur in the pregnant woman and newborn. Dermatom distributed vesicular lower rib cage in the upper quadrant. Herpes zoster. Umbilicus assessment, inspect umbilicus, noting position, counter, color, and discharge. Ask patient rise, head and bed, note any bulges, umbilicus inverted and midline abnormal. Protrusion of umbilicus hernia and underlying mass may cause umbilicus to deviate from midline. View abdominal from different angle, abdominal symmetry bilaterally from costal margin to iliac crest with umbilicus in center, asymmetry, tumor, cyst, bowel obstructions, organomegaly or scoliosis. Counter and distension assessment, costal margin, symphysis pubis, flat, this is the flat and this is the scapoid and rounded and protuberant shapes of the abdomen. इस तरह मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं. Inspects counter for various angle, no abdominal distension in average adult. Counter should be either flat, round, and scapoid. A flat counter seen muscular patients who is physically fit. Counter and distensions, abdominal distension cause are FS, fat, fluid, feces, fetus, flatus, fibroids, full bladder, falls, pregnancy, and fetal tumor. The area of abdomen that is distended can pinpoint cause of distensions. Right lower quadrant, left lower quadrant, pregnancy, ovarian, uterine tumor, bladder enlargement, left lower quadrant and right lower quadrant, pancreatic cyst, tumor, and gastric distension. Asymmetrically, tumor, hernia, cyst, bowel obstructions, concave abdomen can also indicate malnutrition. Surface movement. Look for respiration, pulsation, and peristalsis on thin patient. Peristalsis, aortic pulsations may be visible. Women respirations are more thoracic, whereas their abdominal muscles with breathing. Abnormal finding: increased peristalsis, intestinal obstructions, reverse peristalsis views, pyloric stenosis, abdominal respiratory movement, accessory muscles, shallow respirations, male patient, pain, increase pulsations, aortic aneurysm. Bowel sound assessment, bowel sound always auscultate prior to palpation. Quadrant of the abdomen with the umbilicus as the midpoint. Use the diaphragm portion of the stethoscopes to listen bowel sound in all four quadrant. Listen 5 minutes before starting. Patient has absent bowel movement. In an average adult patient, bowel sounds present rate 5 to 30 clicks per minute in each quadrant. Listen over the ileocecal wall in the right lower quadrant to the right umbilicus. This is normally very active areas connect to small intestine to the large intestine.
Abnormal finding: bowel sound more than 30 clicks, bowel sound per minute, hyperactive bowel sound, hyperperistalsis. Cause include irritable bowel disease, bowel infection, early bowel obstructions, diarrhea, resolving peristaltic laxative use. Types of hyperperistalsis: barbarisme, which may be audible without stethoscopes and are characterized by the long stomach gargling, suctions, splash. Loud sound like splashing were often heard without stethoscopes as the patient moves from side to side. It occurs when the abdomen is filled with the air fluid and indicate delayed bowel sounds less than 5 clicks per minute but present. Hypoactive hypoperistalsis cause include peritonitis. Absent bowel sounds are caused by the late bowel obstructions, peritonitis, paralytic surgery, or arterial and venous vascular sounds. Brutes use the bell portions of the stethoscopes to listen to vascular sounds. Brutes venous, if indicate listen for brutes over the abdomen at the middle line of epigastric area. If indicate listen for brutes over the renal arteries above the umbilicus to the right and left of the midline. In if indicate listen for brutes over the iliac arteries below the umbilicus to right, left, midline in the lower quadrant. Arterial and venous vascular sound: auscultating the renal artery, auscultating iliac artery. ये पोजीशन देखें जहाँ पे इसको क्या कर रहा है, ऑस्कल्टेट कर रहा है. ऑस्कल्टेटिंग द एब्डोमिनल एओर्टा, ऑस्कल्टेटिंग फॉर फीमोरल artery. इसमें और कुछ नहीं है. Venous humes, if indicating listen for the venous hume over the liver in the right lower quadrant with the bell. This is the bell. No venous bones. Fractions rub, if indicating lesson for fractions rubs or the inflamed organs humors with the diaphragm. No fractions rub. परकजन ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन की परकजन कर रहे हैं. ऑस्कल्टेशन ख़त्म, अब परकजन की बारी है. अब इसी तरह सारों की यही डिटेल होगा. जो नज़र नहीं आता बस फास्ट रीडिंग करते हैं. यूज़ इंडिकेट मीडिएट परकजन्स, परकज एब्डोमन इन ऑल फोर क्वाड्रेंट, परकस टेंडरनेस एरिया. नोट एरियाज ऑफ डलनेस एंड टेम्पेनी to dullness depending on abdominal content. Abnormal: external high-pitched tympani sound, distension, extensive dullness, organ enlargement, and underlying mass. Liver key assessment: perform scratch test to locate lower edges of the lower. Place diaphragm stethoscope over the liver in right lower quadrant while gently scratching abdomen with your other hand. Working from RLQ, mid-clavicular, moving upward toward the liver. Mark point on abdomen. Use indicate medicate percussion, determine liver size. Locate upper edges of the liver by percussions downward at the mid-clavicular line from the fourth intercostals. From resonance dullness, mark upper border of the liver. Locate lower edges of the liver by percussing upward the mid-clavicular line from the right lower quadrant. From tympani dullness, mark lower border of the liver. Liver: measure the distance between upper and lower marks to obtain liver spin. If the liver spin is greater than 12 cm at the mid-clavicular line, mid-sternal measurement of the obtained using above technique at the mid-sternal line. Average adult liver spin at mid-clavicular line is 6 to 12 cm, 4 to 8 cm at mid-sternal line. Measurement vary according to gender and height. Men larger liver spins 6 months. For example, the liver spin 6 month old child around 2.5 centimeter, where 24 months old 3.5 centimeter. Abnormal: liver spin greater than 12 centimeter will be hepatomegaly. ये चीज़ बस याद रखो, ज़्यादा हो तो हेपेटोमेगाइल. स्प्लीन की असेसमेंट कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई एरिया ऑफ स्प्लीनिक डलनेस, पोजीशन पेशेंट्स ऑन राइट साइड, परकस डाउन मिड ऑक्सिलरी लाइन from an areas of resonance over the lungs to dullness over the spleen. Spleen normally may not be detectable in the normal patient. If detected, the upper border should be percussed 6 to 8 cm above the left costal margins. The body of the spleen should be percussed between the
and elevate ribs. Abnormal upper border percussed beyond 8 cm above the costal margins. And large spleen cause include portal hypertension, thrombosis, stenosis. इसमें ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत ज़रूरी है याद रखनी चाहिए कि इसमें एबनॉर्मल क्या है। अपर बॉर्डर जब होता है तो स्टेनोसिस, artesia deformitis of splenic vein, cyst, cancer, and mononucleosis, trauma, and infractions. As long as patient does not have a full stomach or intestine dullness from full stomachs, intestine difficulty to differentiate from splenic dullness. Bladder key assessment. If indicate purpose for bladder dullness at midline above the symphysis pubis, you should not able to percuss the bladder above the level of pubic symphysis after the patient has voided. Dullness in suprapubic area, full bladder. For other cause, C-section, abdominal costovertebral angle, CVA. Place a non-dominated hand over the kidney. Make a first with dominant hand and strict dominant. Note any tenderness, kidney tenderness is assessed, and CVA no CVA tenderness. Abnormal severe pain or tenderness, kidney infection या muscle skeleton problem. अभी palpation करते हैं. Abdominal examination की palpations. Ensure that your hands are warm. Stand on the patient right side. Help to position the patient. Ask whether the patient feels any pain. Before you start, begin with superficial examination. Move in a systemic manner through the abdominal quadrant. Repeat palpation deeply. Palpations of abdomen. Light palpation, deep palpation. Light palpation above 1/2 inch in each quadrant. Palpating painful areas last. Note surface characteristic and areas of tenderness. 1/2 सेंटीमीटर MCQs के लिए याद रखें. Deep palpation is a single hand technique. Use dominant hand and palpate greater than 1/2 inches in each quadrant. Biomanual technique. Place a dominant hand on abdomen. Place non-dominant hand on top and palpate greater than 1/2 inch in each quadrant. Abdomen soft and non-tender. No organomegaly or masses या non-tender. Abdominal peritonitis, tenderness, enlarged liver and enlarged spleen. Palpating aortic pulsation. Palpate in the epigastric area at the midline for abdominal aortic pulsation. Do not palpate a patient who has suspected abdominal aortic aneurysm. It can cause aneurysm to rupture, resulting a renal failure, loss of limbs or even death. तो ज़्यादा ज़ोर वगैरह नहीं देना कि उसकी किडनी फेल ना हो जाए. Aortic pulsates in an interior directions. No diffusions. Normal width no greater than 3 cm. Abnormal lateral diffusions, pulsations, abdominal aortic aneurysm, width greater than 3 cm. Abdominal aortic aneurysm. Liver. Palpate of liver. Stand at the right side of your patient. Place left hand under the patient back, CVA, and place right hand along the costal margins at right mid-clavicular line. Have a patient take deep breath while you press your right hand in and up, while at the same time with your left hand press upward to the elevate the liver. ये पिक्चर में देख लें, डायरेक्ट कर लें, ज़्यादा थ्योरी से कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिकल में बस कहाँ पे लेवर है उस पर हाथ रखें, उसको पाल्पेट करें. इसकी अल्ट्रेशन टेक्निक. ब्लॉकिंग टेक्निक. स्टैंड ऑन राइट साइड ऑफ द पेशेंट फेसिंग टुवर्ड द पेशेंट. फीट. प्लेस योर हैंड ओवर द पेशेंट राइट कोस्टल मार्जिन एंड बुक फिंगर ओवर द एजेस. हैविंग डीप ब्रीथ. फील फॉर लिवर एजेस. एबनॉर्मल क्या है? पाल्पेशन बिलो कोस्टल मार्जिन, congestive, heart failure, hepatitis, encephalopathy, cirrhosis, cyst, and cancer. If liver is enlarged, tenderiform, and nodule has an irregular border, and suspect liver cancer. Spleen की palpation कैसे करेंगे? Stand at the right side of your patient. Place right hand under the patient back and left CVA
and place right hand under the patient back of CBA. Place left along the right costal margin. Have patient take deep breath while you press inward along the costal margin. The spleen is normally not palpable. Spleen enlargement and tenderness, infection, congestion, हार्ट फेलियर, कैंसर, सिरोसिस और ट्रोमा हो सकता है. किडनी की palpation कैसे करेंगे? To palpate the right kidney, stand at right side of your patient. Place your right CBA captured kidney by pressing hands together. Patient use the same technique to palpate kidney are normally not palpable. Patient is very thin, elderly. एबनॉर्मल क्या होगा? इनलार्ज किडनी, हार्डोनेफ्रोसिस, न्यूप्लाज्म, पॉलीसिस्टिक डिजीज, किडनी टेंडरनेस, ट्रोमा और इन्फेक्शन हो सकता है. ब्लडर की पाल्पेशन, पाल्पेट अबाउट द फाइसिस प्यूबस at the midline. The blood is usually non-palpable, usually tainted with urine. If palpable, filled with smooth and round masses. Abnormal नोड्यूलर एंड एसिमेट्रिकल ब्लडर में इंडिकेट मैलिग्नेंसी. ये पिक्चर में उसकी पोजीशन देख लें. इसको पाल्पेट करना है. इंजॉइनल लिम्फ नोड्स को कैसे पाल्पेट करना है? इंजॉइनल पाल्पेट as see in picture is very dangerous. Palpate the horizontal lymph nodes in the groin. Palpate the vertical lymph nodes along the inner aspects of the thigh as see in picture. If nodes are palpable, they should be less than 1 centimeter, smooth, movable and non-tender. Abnormal क्या है? Tender, unmovable nodes greater than 1 centimeter, infections, cancer or lymphoma. Abdominal reflexes अब चेक करना है abdominal की. उसके using tongue bladder, stroke abdomen upward and toward the umbilicus to each quadrant. Positive abdominal reflex diminished response may be found in obese patients. Those who have been pregnant, abdominal reflexes may be absent in elderly patient. Ballottement. Using bimanual technique, place one hand on the abdomen over mass and push inward toward the mass. Place other and flexator. ये क्या है? Kehr signs as abdominal free floating mass in abdomen. ये Kehr sign assessment करते हैं इसकी. With the patient supine, move patient arm upward. Note rapid pain in left shoulder, not normally present. Positive Kehr signs, splenic injury, renal calculi and ectopic pregnancy. ये भी हो सकता है. And balance signs percus the left upper quadrant for dullness, no tenderness, not normally present. Positive balance signs, peritoneal irritation या इंजरी टू द स्प्लीन हो सकता है. बैलेंस साइंस ये MCQs में आ सकते हैं. बस इसके लिए रखो कि इंजरी ऑफ स्प्लीन हो सकता है बैलेंस साइंस से. और मॉर्फी साइंस से क्या हो सकता है? एब्डोमिनल. पॉजिटिव मॉर्फी साइंस कोलिसिस्टाइटिस या कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर हो सकता है मॉर्फी साइंस से. इनसे जस्ट ये वाले MCQs बन सकते हैं. MC बॉर्नी साइंस, इससे क्या हो सकता है कि पेन पॉजिटिव MC बॉर्नी साइंस अपेंडिसाइटिस हो सकता है. बस MC बॉर्नी अपेंडिसाइट के लिए याद रखना कि उसको पाल्पेट करोगे तो पता चलेगा अगर पेन है. ऑब्टोरेटर मसल्स टेस्ट help diagnose rupture appendix या pelvic abscess. Patients lies supine, reflexes right leg at hip knee. Place one hand just above the patient knee and other hand at the ankle. Rotate leg internally and externally. Pain should not occur in bifrogastric region. Abnormal pain, positive obturator muscles test, irritation of obturator muscles which may be caused by the rupture appendix and pelvic abscess. ये obturator muscles test है जिससे आपको appendix की rupture के बारे में पता चलता है. obturator muscles test. Rousing signs, right lower quadrant pain, positive rousing signs, peritoneal irritation और appendicitis के लिए ये भी है. अराउजिंग साइंस, यहाँ पे पेन होगा तो ये क्या है? अपेंडिसाइट या यहाँ पे क्या है? इरिटेशन है.
क्यूटीनियस हाइपर सेंसिटिविटी, ये क्यों होगा? ये क्यूटीनियस हाइपर सेंसिटिविटी इंडिकेट पेराटोनियल इरिटेशन होगा, या राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन एपेंडिसाइट होगा, या पेन इन मिडल एपिगैस्ट्रिक रीजन पेप्टिक अल्सर होगा। तो ये बस क्यूटीनियस हाइपर सेंसिटिविटी के लिए एबनॉर्मेलिटी, यहाँ पे पेन है तो ये क्यूटीनियस हाइपर सेंसिटिविटी है। ये ग्रेसफुल स्किन टच एंड एब्डोमिनल, दिस इज द ट्रिक्स। इलियोप्सोसिस मसल्स टेस्ट, इलियोप्सोसिस मसल्स टेस्ट किस तरह करते हैं? इसका राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन है, पॉजिटिव इलियोप्सोसिस मसल टेस्ट, इरिटेशन काज बाय द इन्फ्लेम्ड परफोरेटेड एपेंडिसाइट, ये सारे के साथ रिलेटेड है एपेंडिसाइटिस के साथ, कि यहाँ पे क्या होगा, इलियोप्सोसिस मसल्स टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे इसको पेन होगा। अच्छा, रिबाउंड टेंडरनेस, इसका एब्डोमिनल एबनॉर्मल क्या है कि रिबाउंड टेंडरनेस, पेन दैट इंक्रीज व्हेन यू रिमूव योर हैंड, पेराटोनियल इरिटेशन होगा, रिबाउंड टेंडरनेस इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, MC बर्नी पॉइंट एपेंडिसाइट, जब आपका यहाँ पे हाथ है तो दर्द नहीं, जब आप हटाओगे तो फिर दर्द होगा, तो ये रिबाउंड टेंडरनेस है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट किस तरह करोगे? सारा असेसमेंट तो कर लिया, तो इसके लिए फास्ट रीड दोबारा करते हैं। एब्डोमन, एब्डोमन यूनिफॉर्मली लाइट पिंक इन कलर, नो अच्छा, स्ट्रिप Nausea, pus and hernias noticed, umbilicus concern to previous colocystomy, abdomen protuberant, slightly distant in the lower half, no aortic pulsation, peristalsis noted, hypoactive bowel sound in all four quadrant, no broods, fractions, robes, venous humps, liver spin 6.5 cm at mid clavicular line, unable to percuss bladder or spleen, no CVA tenderness, abdomen soft and slightly tender in lower quadrant, liver, spleen, kidney, bladder and inguinal nodes not palpable, abdomen aortic approximately 2 cm, palpable just left of middle line, superficial abdominal reflexes intact, no ascites noted with shifting dullness test. Anus, rectum and prostate assessment. I think it is the next chapter. Thank you. Allah.